Okay, ठीक है. ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ऐसा कहते हैं. The only way to know is for you to become that. Only a yogi recognizes a yogi. है ना? It's hard because how will you know? Until you've seen it all, how will you know it all? सीधी बात है. एवरेस्ट पे जब ऊपर से क्या दिखता है, कैसा दिखता है, वो तो ठीक है, लेकिन अनुभव जो ऊपर जाएगा वही बता पाएगा कि इधर से ऐसा दिखता है वैसा दिखता है एवरेस्ट पे जा करके, है ना. इसलिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा होगा. योगियों का अनुभव मोस्ट लाइकली दिस इज़ हाउ दे फील, दैट दे फील. ये तो फोटो में देखा है हमने, किसी ने वीडियो भेज दिया एवरेस्ट से, ये वो व्हाट्सएप पे. लेकिन फॉर यू टू रियली हैव एक्सपीरियंस्ड इट अलोन विल द but the relief is in that it is, to your point, it is available to all. ऐसे नहीं कहा है कि वो सन्यासी योगी नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है, है ना. So we don't want to make that mistake by saying, oh, सन्यासी therefore ये योगी नहीं है. ना सन्यासी भैया परमहंस योगानंद, रामकृष्ण, whether गृहस्थ और नॉट गृहस्थ, विवेकानंद, धुरंधर योगी, ऐसे ऐसे उदाहरण. सो ये गलती ना होने देना कि सन्यासी है तो योगी नहीं है. ये पक्का है, अगर योगी है तो सब कुछ है. लेकिन सन्यासी योगी अपने योगी बन के अगर पहले से गृहस्थ थे तो गृहस्थ में रह रहे, पहले से सन्यासी थे तो सन्यास में जाके रह रहे, उसमें दिक्कत क्या है? इनफैक्ट सन्यासी कुड बी हार्डर योगी इफ यू लुक एट डिफरेंट वे, बिकॉज़ यू आर लेटिंग, you don't know the fruits, but you're letting all action go. You don't care, life go. This will also further clarify. Yoga is a state of mind. Exactly. Sannyas, karma, jnani, bhakti is a state of doing. मंजीरे कूट के, ढोलक बजा के, है ना, जो करते जाओ, पढ़ते जाओ, सोचते जाओ, अच्छा कर्म दान धर्म करते जाओ. All others, they take you to that state of mind. इसलिए they are not inferior. They're not bad. They're not wrong. They are going to take you there. Yoga is internal transformation. So stay with me for a moment. If I got to the state of yoga through grihastha, I was actually married, I had kids, and I came here and all that. If I have that yogic state of mind, अभी बचा हुआ जीवन क्या करे? Why would I go and do like that for sannyas? I have no idea what sannyas is like, what to do. I don't know any rituals. I don't even know if my body can handle it. But I'm very comfortable. I know how to deal with grihastha. Then I'm going to just stay as a grihastha, carrying that yogic state of mind, and finish the rest of my life first class executing my duties as a grihastha. Now, juxtapose that with that, a sannyasi who has reached the yogic state of mind through sannyas. है ना, जैसे विवेकानंद हो गए, जो भी जिनको भी आप मानते हो, वो हो गया उनकी योगिक स्टेट ऑफ माइंड हो गई. अब क्या करे बाकी का जीवन, है ना, ये शास्त्र सम्मत बात है, मेरी अपनी बात नहीं है. अब बाकी का जीवन क्या करे, जाके वापस जो कर रहे थे पहले और करो, धुरंधर. फिर उसके बाद विवेकानंद रामकृष्ण मठ बनाया, रामकृष्ण संघ जो बना, और रामकृष्ण जाने के बाद बना. विवेकानंद इधर से अमेरिका से वापस जब गए, उसके बाद देन आफ्टर ही अचीव्ड दैट, absolutely perfected that yogic state of mind, then वो शिष्य बने, ये वो सब इतना भी फैल गया. उसके बाद सेम थिंग विथ परमहंस योगानंद, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो जो पढ़ा होगा तो. सो जहाँ से आए उधर जाके, अभी हम लोग से इंडिया से बार बार अपन फिर से इंडिया को क्यों जाते, एक बार उधर तो जन्मे थे, नहीं फिर से we have that inclination, we go again and again, we might go for retirement there or this that, because that's natural, that's our element, as they say. So those again, key difference. No, these are physical lifestyles, way of living, and yogi is a way of thinking. No matter how you live, where you live, how you live. Does that help clarify? Yeah. Distraction is one impediment. So they're definitely letting go of distractions, but so are others. Bhakt jo hote hai, when they sing a 24-hour kirtan, they are letting go of many other distractions, including food or phone calls or whatever. They're also letting go of distractions. Those who are studious, ज्ञानीज, वो 6-6 घंटा एक पढ़ते हैं, 8-8 घंटे ध्यान लगाते हैं कोई ध्यानी. They're also letting go of distractions. So but they're not sannyasis. So letting go of distractions is a must. उसको एकाग्रता कहते हैं ना, एक अग्र, like one pointed. That you pick one thing that you want to do and throw yourself on it. So that also cuts across that ekagrata. Sannyas is essentially saying that I am going to limit my activities. I am going to play to my strengths. I have figured what I'm good at, what I'm natural at, what I like to do. This is attractive to me. Therefore, I'm going to stay here.
So in a sense, letting go of distractions, but I'm going to play in this, I'm going to run in this lane, I'm going to swim in this lane and reach there. And they do, right? Or they can at least. I don't know if they do or not, or how many do, I don't know. But they certainly can. उसके बाद क्या करना is where yoga starts, पहुंचने के बाद. And karmis might say, this is my lane, I'm going to swim in this. Gyanis might say, I'm going to swim in this. And bhakt is, so might in this. भक्त से ऊपर कहाँ है योगी को, है ना ऐसे भी. तो क्योंकि योगी क्या होता है, प्रेमी होता है, भक्त नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, कर्मी नहीं होता, ये ध्यानी नहीं होता, ये सब होता है. ये सब करके फिर प्रेमी बन जाता है ना. इट्स अ वेरी रेयर स्टेट ऑफ माइंड. जो परमहंस अपना नॉट परमहंस योगानंद, ही वाज एक्चुअली अ लवर ऑफ गॉड, बट हु आई एम थिंकिंग ऑफ इज गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, है ना, वो हरे कृष्णा इस्कॉन वाले, उनके जो पहले जो गुरु थे. ही इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ दैट. इट्स अ वेरी ब्रिलियंट स्कॉलर. इफ यू रीड हिज, द हाईएस्ट ब्राह्मण ऑफ द हाईएस्ट काइंड, एंड दैट्स सुपर ब्रिलियंट फॉर हिज एज, फॉर हिज टाइम. दे लिटरली थ्रू हिज बुक्स इन द गंगा, वहाँ पर जो मायापुर में है कलकत्ता में. वाई? बिकॉज हिज फ्रेंड हैड रिटन समथिंग एंड न्याय शास्त्र में. And he thought that his friend thought he was going to become famous because of it. When he started, and Chaitanya said, "Oh, good, I've written something too. If you want to read, tell me what you think." नाव में बैठे थे, दोनों जा रहे थे नदी के उस पार, उनकी पाठशाला रहती थी गुरु का. We started reading and started crying. He said, "God, like, who is going to care to read my work like this? What I've done is nothing compared to this." So he said, "Don't cry. It's okay. Like, I think yours should stay." Literally through it, gone. 6 books that he had written. He said, "May yours stay." And he said, "No, that's not what I want. It doesn't matter. Like, I just want Krishna. Yare dekh tare kahe Krishna upadesh. Amara agya guru tari ei desh." Bangla bhasha mein kaha कि the instruction for me is just Krishna, 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 Krishna. Like, just go up and down this holy land of Bharat, singing and chanting the names of Krishna. I'm not here to write books or to show off my wisdom. May yours stay. Karke. So that's one example. When you say sannyasi, the 3rd verse in the 5th chapter, 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, ये गृहस्थ सन्यासी है कि बाबा जी सन्यासी है. कहते कोई सब लोग सन्यासी है. कैसे? ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, फॉरएवर सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति. ये 2 बातें अगर कर सके, टू योर पॉइंट, अब हम लोग भी सन्यासी इसका जीवन जी सकते हैं गृहस्थ में रह के. न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी का द्वेष, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, स्थिति नहीं, परिस्थिति नहीं, जो भी, whatever, द्वेष ना हो. neither despising nor desiring. कांक्षा is desire, द्वेष is despising. अच्छा नहीं, अच्छा बुरा, खाली, not just people, things, objects, conditions, situation, circumstance, politics, party, president, dharma, guru, ashram, skin, color of skin, gender, nothing. Not despising, not, ये जो 2 करे, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचते. ये द्वंद्वों में जो नहीं पड़ता, ड्युअलिटी में जो नहीं पड़ता, वो सुखपूर्वक ऐसे ही पहुंच जाता है. भगवान कहते 5वें अध्याय में, सन्यासी नाम उसका योग, अध्याय का नाम ही है कर्म संन्यास योग. कर्म से छुट्टी अगर चाहिए तो ये दोनों से छुट्टी अगर मिले तो यस, ऑफ कोर्स, वी ईच ऑफ अस कैन नॉट जस्ट बिकम अ सन्यासी. ही सेज नित्य सन्यासी in wherever we are, whatever we do. So therefore sannyas is also to be lifted up, held in high regard. It's a path. This is the destination, yoga. And there's a difference. They're connected. Destination is connected to the path, always. Yeah. Maybe we can take this as the last, and I know you have to go. Buddha Dev, I revere him, honor him. I am not capable. मेरी इतनी लाइक औकात नहीं है of commenting, of validating or invalidating or saying anything. Or he's God. For me, he's God. And I hold him in the highest regard also. Even though there is a different religion named after him, which is different from the one that I followed, it came after him. He never claimed or said that, hey guys, like former religion, let's call it Buddha धर्म है, मेरे नाम से चलाना इसको. none of that. Jesus never said Christianity बनाना मेरे नाम से लगाना, मेरा क्राइस्ट है ना तो क्रिश्चियन बनाना. नानक never said सिख धर्म बनाना.
एंड वर्धमान नेवर सेड कि मेरे यहाँ से अलग टुकड़ा कर देना, इधर अपना रखना बाजू में, अलग से संभाल के जैन धर्म को. एटलीस्ट इन माई नॉलेज they were all exalted Mahapurush. They were the real yogis. Vardhaman was a yogi, Buddha was a yogi, Nanak was a yogi, Jesus was a yogi who didn't care of tukade. They were inclusive of the highest kind. So Buddha was that. Since you ask me, my response would be that Buddha was a yogi from the beginning. Because he was an incarnation, right? भागवत में आता है वो जिसको हम कृष्ण कृष्ण करके नाचते हैं, उसी का उसके बाद का अवतार बुद्ध था. कोई अलग नहीं था उसमें से, ना नवा जो शांति के लिए आया था, अलग अलग अपने अपने उद्देश्य से आए थे शांति लाने की. उस समय जो तहलका मच गया था, इसलिए तो it is if you forced me to respond, I would say that he was a born yogi, born as a prince, and then naturally he was going to gravitate towards that. He chose the path of sannyas because at the time the circumstances were such that anachar tha. It was just like the behavior of the society in general had become so corrupt. Anything was going, whatever the heck. And to bring some method to the madness, to draw some lines, to draw boundaries and saying what is right and not, what is good and not, he had to exemplify the highest order, the austerity, the rigor of it, to hold it up. And then after that he became, so sannyas is the path for that. Austerity सबसे ज़्यादा संन्यास में होती है ना, त्याग ये वो जब वो संन्यास मान के गृहस्थ में कहाँ क्या ऑस्टेरिटी कर पाएंगे हम लोग. बच्चे बनाने के कौन सी ऑस्टेरिटी करने का उसके बाद, है ना, संभव नहीं है, छोड़ के जाना पड़ेगा. तभी परीक्षा, उनकी परीक्षा कितनी भी हो जाए, नो वन इन द वर्ल्ड कैन, द मोस्ट एंटी बुद्ध कैन नॉट से दैट ही वाज नॉट एन ऑस्टियर saint. Of course he was the austere of the highest kind, है ना. इसलिए he exemplified that at the highest kind, and then following him was the Buddhism. Therefore we were small people, I'm a small man, I have no capability to comment on one form of God, Buddha. So chalo, Jai Shri Krishna.